हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पीरा एक्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये वीडियो इंतहाई अहम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैप्टर नंबर 9, पेनल्टीज ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर द एक्ट penalties may be imposed for enforcement of schedule laws only if they are: Option A, newly created under the Act. Option B, permitted under relevant schedule law. Option C, suggested by public opinion. Option D, determined by local committee. दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी। अगला सवाल है हमारे पास, The Act states that no penalty shall be imposed unless: Option A, if it is approved by the Chief Minister. Option B, if it is prescribed under the rules. Option C, it is verbally ordered. Option D, it is requested by the offender. दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स। अगला सवाल है, चैप्टर 9 ऑफ द एक्ट primarily deals with: ऑप्शन ए, arrest. Option B, penalties. Option C, public nuisance. Option D, whistleblower disclosure. दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, penalties। अगला सवाल है, penalties under the act must align with: ऑप्शन ए, international law. ऑप्शन बी, scheduled laws. ऑप्शन सी, म्यूनसिपल regulations. ऑप्शन डी, verbal orders. दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, scheduled laws। अगला सवाल है हमारे पास, precautionary jurisdiction for penalty is applicable to: ऑप्शन ए, all officers of the authorities. ऑप्शन बी, only the hearing officer. ऑप्शन सी, only the chairperson. ऑप्शन डी, only magistrate. दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए, all officers of the authority। अगला सवाल है, penalties under the act cannot exceed those: ऑप्शन ए, listed in the schedule. ऑप्शन बी, permitted under scheduled laws. ऑप्शन सी, imposed by the police. ऑप्शन डी, proposed by the offender। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, permitted under scheduled laws। अगला सवाल है, the word prescribed under the penalty context mean: ऑप्शन ए, written in a document. Option B, set by rules or regulations under the Act. Option C, suggested by offender. Option D, recorded by enforcement station. दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, set by rules or regulation under the Act। अगला सवाल है, which officers are bound by pecuniary limits when imposing penalty? Option A, only enforcement officers. Option B, only officers of the authority. Option C, only prosecutors. Option D, only the district board। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, all the officers of the authority। अगला सवाल है, penalties under chapter 9 are linked to: ऑप्शन ए, enforcement of scheduled laws. ऑप्शन बी, media reporting. ऑप्शन सी, whistleblower reward. ऑप्शन डी, public opinion polls। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए, enforcement of scheduled law। अगला सवाल है हमारे पास, द मैनर ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टीज इज डिसाइडेड: ऑप्शन ए, बाय पुलिस ऑफिसर्स. ऑप्शन बी, बाय रूल्स और रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्ड. ऑप्शन सी, बाय ऑफेंडर प्रेफरेंस. ऑप्शन डी, बाय पॉलिटिकल पार्टीज। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, बाय रूल्स और रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्ड। अगला सवाल है, द प्रिस्क्राइब्ड मैनर्स फॉर पेनल्टीज इज फ्रेम्ड बाय: ऑप्शन ए, गवर्नमेंट अंडर द रूल्स और रेगुलेशंस. ऑप्शन बी, ऑफेंडर. ऑप्शन सी, एनजीओज. ऑप्शन डी, पुलिस यूनियन। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए, गवर्नमेंट एंड रूल्स और रेगुलेशंस। अगला सवाल है, पेनाल्टीज इम्पोज कंट्रारी टू स्केड्यूल लॉज और: ऑप्शन ए, वैलिड. ऑप्शन बी, इनवैलिड. ऑप्शन सी, इनकरेज्ड. ऑप्शन डी, निगोशिएटेबल। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, इनवैलिड। अगला सवाल है, द बेसिस फॉर पेनाल्टी इम्पोजिशन इज: ऑप्शन ए, ऑफिसर्स ओपिनियन. ऑप्शन बी, स्केड्यूल लॉज. ऑप्शन सी, पब्लिक कंप्लेंट्स. ऑप्शन डी, एनोनिमस टिप्स। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, स्केड्यूल लॉज। अगला सवाल है, penalties cannot be based on: ऑप्शन ए, prescribed rules. ऑप्शन बी, scheduled laws. ऑप्शन सी, arbitrary decisions. ऑप्शन डी, regulations। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी, arbitrary decisions। अगला सवाल है, scheduled laws in the penalty context are: ऑप्शन ए, listed in the act schedules. ऑप्शन बी, random laws. ऑप्शन सी, local customs. ऑप्शन डी, international treaties। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए, listed in the act schedule। अगला सवाल है, a penalty must not exceed: ऑप्शन ए, the offender's income. ऑप्शन बी, limits in relevant schedule laws. ऑप्शन सी, ₹1000. ऑप्शन डी, officer salary। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी, limits in relevant schedule laws। अगला सवाल है, the penalty system in chapter 9 aims to:
Option A, ensure fairness and legality. Option B, increase revenue only. Option C, punish arbitrarily. Option D, bypass laws. दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए, ensure fairness and legality. अगला सवाल है द प्रिस्क्राइब्ड मैनर्स इंश्योर्स ऑप्शन ए यूनिफॉर्म पेनल्टी प्रोसेस, ऑप्शन बी आर्बिट्रेरी डिसीजंस, ऑप्शन सी रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन डी पब्लिक वोटिंग. दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए यूनिफॉर्म पेनल्टी प्रोसेस. अगला सवाल है द एक्ट फॉरबिड्स पेनल्टीज ऑप्शन ए इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ऑप्शन बी बियॉन्ड स्केड्यूल्ड लॉ लिमिट्स, ऑप्शन सी विद इन पिक्शनरी लिमिट्स, ऑप्शन डी बेस्ड ऑन रूल्स. दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी बियॉन्ड स्केड्यूल्ड लॉ लिमिट्स. आखिरी सवाल है पेनाल्टीज अंडर द एक्ट कैन नॉट बी, ऑप्शन ए प्रिस्क्राइब्ड, ऑप्शन बी आर्बिट्रेरी, ऑप्शन सी स्केड्यूल्ड, ऑप्शन डी लीगल. दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी आर्बिट्रेरी. थैंक यू so much for watching my video.